Today we'll be starting the bonding chapter, or iske andar, this bonding chapter is divided into three topics. One is metallic bonding, then we have covalent bonding, फिर हमारे पास ionic bonding है. तीन types of bonding है. Starting with the ionic bonding. अब ionic bonding के दरमियान होती है ionic bonding between a metal and a non-metal. So उससे पहले before going to ionic bonding, we should know कि ions क्या होते हैं और atoms क्या होते हैं. If you know that जो atoms होते हैं, in an atom protons and electrons are equal, whereas in an ion electrons are gained or lose, और फिर वो atom क्या बन जाता है, becomes an ion once it gains or loses electron. उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि yes, it is no more an atom because protons are no longer equal to electrons. So an ion is electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of electron. For example, calcium metal है. Now calcium is a cation, a positive 2 plus, because it has lost 2 electrons. तो उसके ऊपर 2 plus का charge आता है. जैसे फिर हमारे पास एक bromine है. Bromine has a minus charge when it -1 का charge है जब ये एक electron gain कर लेता है. So the loss or gain of electrons takes place to obtain a full outer shell of electron. कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करती है, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करती है, बिकॉज उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है. तो कंप्लीट दैट आउटर मोस्ट शेल इट गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इट गेन्स अ नेगेटिव चार्ज. इफ द एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज. Now the electronic structure of ions of elements in group 1, 2, 3, 5 and 6 and 7 will be the same as that of a noble gas such as helium, neon and argon. अब क्या होगा, अब जैसे नोबल गैसेस होती हैं वो किस ग्रुप में है, वो आपके पास ग्रुप नंबर 8 में. अब ग्रुप नंबर 8 का मतलब ये कि आउटर मोस्ट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ना ही गेन करते हैं ना ही लूज करते हैं. हेंस देयर आर नो मोर आयंस. ग्रुप 8 या ग्रुप 0 जो नोबल गैसेस होते हैं, ग्रुप 8 एटम्स कैन नॉट फॉर्म आयंस क्योंकि देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट. Atoms whose outermost shell is not complete, either they have to lose electrons to make their outer shell complete, or they have to gain electrons to make their outermost shell complete. Only then they become ions. Now, negative ions are called anions and forms when atoms gain electrons, meaning they have more electrons than protons. जैसे कि नाइट्रोजन हो गया -3, या ऑक्सीजन हो गया -2, क्लोरीन हो गया -1. ये ग्रुप 5 में से है, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 ये एनायंस बनाते हैं. उनका मतलब क्या है, नाउ दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स. फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स है, बट टू कंप्लीट इट आउटरमोस्ट शेल उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है. बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन अब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल टू प्रोटॉन्स नहीं रहे. दिस इज व्हाट इट डिफाइंस एन आयन. एक आयन में प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स. Positive ions, on the other hand, are called cations and form when atoms lose electrons. For example, Mg, magnesium 2 plus, aluminium 3 plus, 3 electron lose करके ये क्या है? They are called cations. So these were negative ions and these were positive ions. इधर क्या होता है? They have more protons than electrons. क्यों? Electrons कम हो गए. For example, aluminium है. Aluminium have 13 protons, लेकिन 10 electrons. क्योंकि पहले 13 प्रोटॉन्स थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट व्हेन इट बिकेम एन आयन 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए. सो हेंस अगेन प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ इट इज एन आयन. नाउ वी नो दैट ऑल मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स to other atoms to become positively charged ions, and all non-metals gain electrons from other atoms to become negatively charged ions.